Hello students, welcome to all scholar classes. So today I will be taking the second chapter from class 8 science, that is microorganisms, friends and foe. This is the part 2 of the chapter in which I am going to discuss about microorganisms and us. How these microorganisms, they play an important role in our life. Some of these are very beneficial in many ways, but some are very harmful and they causes disease. So today we shall be discussing about the useful microorganisms. Okay? And if you will go in my part 1 video, there is a detail about what is microorganism, why they are called as microorganism. The word micro means small. They are viewed by microscope, so they are called as microorganisms. There you can see the classifications of these microorganisms. You can study about bacteria, protozoan, and fungi, algae, and also about viruses. There I have told you in detail. You can go in my first part of the video. And the second thing, that where do they live? That also has been explained in that part. In this part of the video, we shall be dealing with the microorganism and us. That is how they are important in our life, how they are beneficial to us, and what role these microorganisms they play in our life. Okay, so if we see about the uses of microorganisms, so there are various purposes where these microorganisms can be used. These microorganisms are used in various purposes. So in short, first I am telling you, then we will go in a broad detail. Okay? So in a preparation of some of the foods like curd is there, okay, bread and cake or other items are also there, other pantry items, bakery items are there where microorganisms are used. We shall be studying about it in detail, how these microorganisms they help in the preparation of bread and curd. Okay? Then these microorganisms they are used from the ages, from very far ages. They are used in the production of alcohol. Okay? Where are they used? In the production of alcohol. Fine. Third is that these microorganisms they clean up the environment. Okay? This also we shall study in detail how these microorganisms they help in cleaning up of environment. Okay? Cleaning up of the environment, like many organic waste are there, vegetable peels are there, remains of some animals are there, the fishes which we use that are there. These are broken down into harmless and usable substances by bacteria. Okay? So these microorganisms they are used in different fields. Okay? Now these microorganisms like bacteria, they are used. Bacteria, if you will go in my previous video, you will see that bacteria comes under the category of a microorganism. So this bacteria is used for making medicines. Okay? Okay? Now these microorganisms they are used in agriculture also. Okay? They are used in agriculture. What they help in soil fertility. Okay? They help in soil fertility. And this is done by fixing nitrogen. So if you see these category of microorganisms, how they are useful, you can see that in cooking they are useful in production of alcohol.
Okay, so let's discuss this one first. And again students, I am telling you, if you want to go in detail about what is microorganisms, classification of them, and about where do they live, just go in the first part of the video, there you will find about it. In this part only I shall be discussing about how these microorganisms are useful to us. Okay. So how this curd is formed, you must have seen your mother, what she used to do at home, that she adds little bit curd in a lukewarm milk. Okay, in a warm milk, she adds little curd, and that milk settles down and converts into whole curd the next day. आपकी मदर जो है छोटा सा कर्ड का डालती है मिल्क में, हॉट मिल्क में, तो वो नेक्स्ट डे क्या बन जाता है, वो भी कर्ड बन जाता है. ठीक है, तो ये बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन दिस, ऐसा क्या होता है कि ये कर्ड जो है कि मिल्क में डालने से पूरी कर्ड प्रिपेयर होती है. तो ये जो कर्ड है, व्हाट डज इट कंटेन्स? इट कंटेन्स several microorganisms. Okay, it contains several microorganisms. कर्ड में क्या होता है? several microorganisms होते हैं. So what happens कि these microorganisms, out of these microorganisms there is a bacteria in it. कर्ड में बैक्टीरिया होती है. ठीक है, उस बैक्टीरियम को हम क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस. That bacteria is called as lactobacillus. Okay, so this lactobacillus, what does it do? It promotes. Okay, it promotes the formation of curd from milk. Okay, so these curd they contain several microorganisms, और उस microorganism में एक बैक्टीरिया होती है जिसका क्या नाम होता है? लैक्टोबैसिलस. And this lactobacillus promotes for the formation of curd. So basically होता क्या है इस प्रोसेस में? होता क्या है, कैसे ये प्रमोट करती है? तो क्या होता है कि मल्टीप्लाइज इन मिल्क में मल्टीप्लाई कर जाती है. ये जो बैक्टीरिया है एक मल्टीप्लाइज, बहुत सारे मल्टीप्लाई होके बहुत सारे ये बन जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लैक्टोबैसिलस सॉरी, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फाइनली मल्टीप्लाई होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है मिल्क इनटू कर्ड. ओके, सो this was about how milk is converted into curd. So bacteria are involved in making some other bacteria are also involved. Curd में involved होते ही हैं. They are also involved in other food items. In fact, you can write all other food items. So other food items की बात करें तो चीज, आप सबने सुना होगा चीज कैसे बनती है. चीज में भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होती है और बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. पिकल्स में भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होती है. बैक्टीरिया इज अगेन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ बैक्टीरिया. ओके, सो हियर यू कैन सी दैट हाउ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज हेल्पिंग इन मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. ओके, so bhaturas very common in India, idli very common in India. So this the main ingredient of, if you make a rava, that is a suji or suji idli you can say, or rava idli or a bhatura. So the main ingredient of that is a curd. Okay, so bacteria है या yeast भी है. ओके, बैक्टीरिया के साथ मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, ईस्ट. इन दोनों का क्या फंक्शन होता है, बैक्टीरिया और ईस्ट का?
start. They helps in a new term will come, that these bacteria and also yeast, they helps in fermentation. In what they helps? They help in fermentation. Okay? अब fermentation में क्या होता है कि अगर आप सपोज करो इडली या भटूरे का बैटर में आप ये डाल के रख दीजिए. ओके, टेक सम फ्लोर, आटा या मैदा लीजिए, add some sugar, mix it, make a dough with a warm water, okay, and add a small amount of yeast. ठीक है, yeast को आप थोड़ा सा yeast powder उसमें add कर दीजिए and knead it and make it a soft dough. Okay, now keep it to rest for at least 2 to 4 hours. Okay, when you keep it rest for 2 to 4 hours, after 4 hours, what you are going to see? You will see that the dough which was in some level that has been raised up. Dough जो है कि फूल जाएगा. ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ उसमें कि ये डो फूल गया. तो ये जो डो फूला ना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? That is called fermentation. So basically fermentation, what happens कि this yeast they reproduce rapidly. ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया जो है कि रिप्रोड्यूस करती है रैपिडली, मल्टीप्लाई करती है कर्ड फॉर्मेशन में. और फर्मेंटेशन में क्या होगा कि ईस्ट जो है कि रिप्रोड्यूस करेगी रैपिडली. और जब ये रिप्रोड्यूस करेगी तो what do they produce? They produce CO2, that is a carbon dioxide during respiration. ठीक है, जब ये अपना रिप्रोडक्शन करेगी तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दे प्रोड्यूस CO2 and this CO2 is a gas. We all know that carbon dioxide is a gas. So the bubbles of the gas fill the dough. Dough के अंदर इस गैस के जो बबल्स हैं, वो जो गैस है CO2 वो फिल हो जाती है और डो की साइज जो है कि इंक्रीज इन वॉल्यूम हो जाती है. अब अगर CO2 की बात करें तो आपने सुना होगा कि बहुत बार लोग फर्मेंटेशन सोडा से भी कराते हैं. तो व्हाई डू दे यूज सोडा? व्हाट इज इन दैट सोडा? तो सोडा में भी CO2 होता है. ठीक है, आप सोडे से अगर डो बना दो, आप उसको सान दीजिए तो वो भी फूल जाएगा. क्यों? तो इसमें रोल कौन प्ले कर रहा है? ये CO2. इस CO2 के जो बबल्स हैं वो जो है कि डो की रेजिंग में हेल्प कर रहा है. ओके, सो द वॉल्यूम इंक्रीजेस. ओके, द वॉल्यूम ऑफ अ बैटर इंक्रीजेस बिकॉज द CO2 gas get filled inside the dough. So this is the basis of the use of a yeast in many of the baking industry. These yeast are used for making bread, pastries, cakes and other items are used. जो भी मार्केट में आपको पाव है, ब्रेड है या बन्स है, जो भी मिलते हैं सब में yeast डाला जाता है. And it is because of the yeast that the batter raises its size. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? Fermentation. Okay? So this was the use of how this curd and other food items are prepared by this microorganism. Okay? So eating purpose में microorganism कैसे हमें help करती है? We have seen that. Now we will see that how these microorganisms they help us at industry level. Okay? Industry level में कैसे अल्कोहल प्रोडक्शन में हमें ये microorganisms help करती हैं. So let's see. So now we shall see the commercial use of microorganisms. How these microorganisms they are used commercially. Okay? So these microorganisms they are used in a large scale for the production of alcohols, wines and acetic acid. Acetic acid is a vinegar. The normal vinegar which your mother uses at your home, you must have seen white color का
ingredient, that is a acetic acid. So it is used in a large scale for the production of alcohols, wine and acetic acid. Okay. Now what happens? If this yeast, it is also used commercially for the production of alcohol and wine. Yeast use होती है किसके प्रोडक्शन में? अल्कोहल एंड वाइन के प्रोडक्शन में commercially use होती है. So for this purpose, this yeast, how it is grown? Do you have any idea? These yeast, they are grown on natural sugar. किस पे yeast को grow कराया जाता है? Yeast are grown on a natural sugar. Okay. So what is the procedure? There, what happens is this yeast are grown on natural sugars that is present. Okay, that is present in the grains, in different grains. Different grains. तो yeast को grow किया जाता है natural sugar के लिए, जो कि present होती है different grains में. Grains क्या है? Grains आपके कोई भी grain हो सकता है, barley हो सकता है, wheat हो सकता है, rice हो सकता है, कोई भी crushed fruit juices हो सकते हैं, कुछ भी. Wheat के भी surface पे yeast को grow मतलब हो कर सकता है, या वो barley पे भी, या किसी भी कोई भी grain you can use. So this is the commercial use of microorganisms, how commercially they are used. Now I shall be discussing a bit about fermentation. We have seen that how fermentation helps in making many of the food items, especially in bakery items. So let's discuss about fermentation. What is fermentation? Okay, so let's discuss about fermentation. Okay, so now if we talk about fermentation, if you take a beaker, okay, just take a beaker, ठीक है, and what you need to fill this beaker with 3/4 of water. ये आपका बीकर है जिसकी साइज मान लीजिए 500 ml है, इसके 3/4 को आप वाटर से फिल कर दीजिए. ठीक है, 500 ml का जो बीकर है वो 3/4 वाटर से फिल्ड है. अब इसमें आप क्या डालोगे? इसमें आप डालोगे 2 to 3 tablespoon of sugars. 2 to 3 tablespoon of sugar. Okay, so when you are going to put this sugar, also what you need along with this sugar, you need to put half a spoon of yeast. Half a spoon yeast. ठीक है, sugar भी डाला आपने, water लिया, उसमें आप yeast भी डाल रहे हो. You are adding yeast to the sugar. Means first you will take the water, then take 2 to 3 tablespoon of sugar. Here I must write sugar. And after adding sugar, add yeast. Okay. Now what you have to do? You just keep this solution, this water solution, in some warm place. ठीक है? बहुत बार warm place के लिए people use their microwave. Microwave पूरा covered होता है. It's very warm. You can keep it for 4 to 5 hours at some warm place. Okay? You have to keep it at some warm place just for 4 to 5 hours. Now what you need to do after 4 to 5 hours, just smell it.
Okay, when you are going to smell it, what you will see? What type of smell you are going to get? You will see alcoholic smell. Okay, when you will smell it, you will see alcoholic smell. So how this alcoholic smell has came? Okay, so what is going to happen that a smell of alcohol, how this has come? Because what is going to happen, this sugar is being converted into alcohol. क्या कन्वर्ट हो गया? शुगर कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में. ऐसा क्यों हुआ? It is because of this yeast which we have added. yeast की वजह से शुगर जो है कि अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया. And this process, the conversion of sugar into alcohol, because of this yeast, इसको हम क्या बोलते हैं? Fermentation. Okay, so fermentation पढ़ाने का यही पर्पस था कि आपको पता चले. तो the process fermentation की definition क्या होगी? The process of conversion of sugar into alcohol, into what? Into alcohol is known as fermentation. ठीक है, इसीलिए अल्कोहल की स्मेल आ रही थी. And this fermentation was discovered by Louis Pasteur. Okay, in which year did he discover fermentation? In the year 1857. ठीक है, fermentation के बारे में लुईस पास्चर ने 1857 में बताया. So this was all about fermentation. So now we shall discuss the medicinal use of microorganisms. So whenever we fall ill, we go to a doctor. What is these doctors provide us? They provided some antibiotic. Okay? They provide us some antibiotic tablets or some capsules, or even they give some injections. You must have heard about an injection that is a penicillin. Okay, it is very common. I will be telling you, we shall be discussing about penicillin also. So I was talking about antibiotics. These doctors, they give us antibiotic. So what is it exactly? So the source of these medicines is what? Microorganisms. These medicines are made, source is a microorganism. So what happens ki these medicines, they kill, okay, or they stop the growth of the disease that is causing this microorganism, and such medicines are called antibiotics. Okay, so what is antibiotics? The medicines, antibiotics is a medicine. एक medicine है ये जो कि क्या करेगी? The medicines that kill, either it will kill or it will stop. Okay, the growth of a disease causing, किसको stop कर देगी? उस microorganism को growth, जो कि growth of the disease causing microorganism है, किसकी growth को stop कर देगी? Disease causing microorganisms के growth को या तो वो stop कर देगी या तो microorganism उसको kill कर देगी. उसको हम क्या बोलेंगे? That we are going to call as antibiotics. Okay, ठीक है. So such are called as antibiotics, or these days a number of antibiotics are being produced from, these antibiotics are produced from either bacteria or from fungus. Okay, बैक्टीरिया से या फंगस से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, like streptomycin is there, tetracycline is there, erythromycin is there. These are some of the common
antibiotics which are made up of fungi and bacteria. Okay, so these antibiotics are manufactured by growing a specific microorganism and are used to cure a variety of disease. Okay, so these antibiotics are even mixed with the feed of livestock, and in the pottery also they are used to check just the microbial infection in animals. These antibiotics एक तो मेडिसिन में दिया गया जो कि किल और स्टॉप करेगी ग्रोथ को, दूसरा क्या है इसके एंटीबायोटिक्स का यूज कहाँ पे है, ये किस में मिक्स कर दिया जाता है, these are mixed in the feed of livestock, in the जो खाना होता है feed of livestock. Okay, in the feed of livestock or in the pottery also it is used. Fine. Why? What they do, they check the microbial infection in animals. Okay, and these antibiotics they are also used to control many of the plant disease. बहुत सारे plant disease के control के लिए भी इनको हम use करते हैं. Okay, so if you are being asked about the functions of antibiotics, you can say that it is used in many of the medicines. They are mixed with the feed of livestock and pottery just to check the microbial infection, and they are also used to control many plant disease. Okay, so it is important, some of the important things that we should remember about antibiotic is that it is good to take antibiotic, but it should be only taken if it is advised by a qualified doctor. Okay, antibiotic को हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे अगर हम एंटीबायोटिक्स बिना किसी एडवाइस के ले लेंगे, आई विल बी टेलिंग यू. तो एंटीबायोटिक के दो मेन चीजें हैं दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. आई एम जस्ट टेलिंग यू. एक तो एंटीबायोटिक आपको तब लेनी चाहिए जब आपको एडवाइस मिली हो डॉक्टर की, ठीक है, और दूसरा क्या है कि इसका एक टेन्योर होता है, एक फिक्स टाइम के लिए प्रिस्क्राइब्ड टाइम होता है, उस कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए. अगर आप उस कोर्स को नहीं कंप्लीट करते हो या अननेसेसरी ले लेते हो, इफ एंटीबायोटिक शुड नॉट बी advised and you are just taking it when it is not needed. Okay, or if you are taking a wrong dose, you are not completing the course or you are taking it overdose, इसके क्या drawbacks होते हैं. फिर drawbacks की बात करें तो पहली चीज क्या है कि जो ड्रगलेस इफेक्टिव है, जब आपको एंटीबायोटिक की जरूरत होगी तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा. ओके, जब फ्यूचर में whenever it may take the drugless effect when you need it in a future, अगर फ्यूचर में आपको इसकी जरूरत पड़ती है तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा. और दूसरी चीज क्या है, इफेक्ट इज लॉस्ट, ठीक है, when needed in future. और दूसरा चीज क्या होगा कि if it is taken unnecessarily when it is not needed, what it is going to do, it kills some of the beneficial bacteria in the body, kills some of the beneficial bacteria present in the body. Okay, कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया होंगी जो बॉडी में प्रेजेंट होंगी, उनको वो किल कर देता है, ठीक है. और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, दैट इज कि एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू, बिकॉज कोल्ड एंड फ्लू इज अ वायरल डिजीज, वायरस के कारण वो होता है, तो उसमें आप अगर एंटीबायोटिक लेते हो तो इट इज नॉट इफेक्टिव. ओके, so this was about antibiotic. Now we shall be
in 1929 there was a scientist whose name was Alexander Fleming. Okay, कौन था? Alexander Fleming. इन्होंने बहुत important discovery की थी. Okay, he was working on a culture of disease causing bacteria. Bacteria culture कर रहे थे ये. What did he found? Suddenly he found a spores of green little mold. Okay, in one of his culture plate. जो उन्होंने कई culture plates बनाई बैक्टीरिया की, उसके एक प्लेट पे उन्होंने green molds देखा. ठीक है, एक प्लेट पे. So he observed the presence of the mold, prevented the growth of the bacteria. तो क्या वो जो mold जो grow कर गया था बैक्टीरिया पे, वो बैक्टीरिया की जो growth थी उसको prevent कर दिया. So in fact it also killed many of these bacteria. Okay, so from this mold what did he made? He made penicillin. Okay, so this was the discovery of penicillin. Okay, in 1929. So now we should study about vaccine. So you must have seen that children or infants, they are given vaccination. ये term सुना होगा आपने. Vaccination is a very common term. So what does this vaccination means? Why this vaccine is given? So what happens कि the disease causing microbes, वो microbes या वो microorganisms जिससे कि वो particular disease होती है, क्या है? Disease causing microbes. Okay, disease causing microbes enter in our body. जब इसको हम कहाँ पे enter कराएंगे? Enter in our body. जो microbes की वजह से वो particular disease होती है, जब हम उसको अपने body में enter कराएंगे तो क्या होता है? क्या generate होता है? It produces antibiotics. Just now we have studied about antibiotics. So it produces antibodies. ठीक है? When you will go in higher classes, you will read about antibodies and antigens, what is their function and how they are used. But basically अभी यहाँ पे आपको बस क्या जानना है कि जब आपको जो disease causing microbes हैं उनको body में डाला जाता है तो उससे क्या produce होता है? Antibodies produce होती हैं और ये antibodies they fight. Okay? कोई भी invader आ रहा है, जो भी बाहर से कोई disease आएगी उससे ये फाइट करेंगे, इन्वेडर से ये फाइट करेंगे. ओके, सो द बॉडी आल्सो remembers how to fight the if it is introduced in a healthy body. Okay, so if it is introduced in a healthy body, it remembers how to fight. जब फ्यूचर में कभी भी कोई इन्वेडर इस टाइप की डिजीज आपकी बॉडी में आएगी तो इट जस्ट स्टार्ट्स फाइटिंग. Okay, so the body fights and it kills the invading bacteria by producing a suitable antibodies. Okay, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? वैक्सीनेशन था कि आपके बॉडी में वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला जाता है जो कि उस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. उससे क्या होगा कि एंटीबॉडीज बनेंगी. तो एक बार वो एंटीबॉडीज बन गई तो बॉडी के अंदर उस फाइटिंग की कैपेसिटी हो गई. तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी फ्यूचर में वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया आपको अटैक करेगा या कभी भी कुछ ऐसा होगा, फॉरेन इन्वेडर आएगा, तो दिस बॉडी विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. ऑटोमेटिकली वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा एंड इट इज गोइंग टू फाइट एंड प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट दिस फॉरेन इन्वेडर. ओके, सो द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. तो ये जो वैक्सीनेशन थी, ये जो एंटीबॉडीज हैं, जब वो प्रोड्यूस हुई तो वो हमारे बॉडी के अंदर अब रहेंगी. जब फ्यूचर में कभी भी कोई भी इन्वेडर आएगा तो they will just fight it and they will secure us from this disease causing microbes forever. एक बार वैक्सीन लग गया तो वो लाइफ टाइम के लिए हो गया. कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जिनके पर्टिकुलर पीरियड्स होते हैं कि हाँ वो एवरी ईयर लेना चाहिए या कभी जैसे भी लेना चाहिए 5 years में. बट कुछ
vaccination is done. So there are several diseases including cholera is there. Okay, cholera is there, and then we talk tuberculosis, that is TB is there, smallpox, hepatitis is there, and polio is also there. So there are so many vaccines have been given, so many diseases are there जिसके के लिए हम vaccines को लेते हैं. Okay, so you must also have remembered in your childhood कि you are given some kind of injections to protect yourself against these several diseases for a lifetime. So it is necessary to protect all the children against these some of the diseases. Polio is also there, hepatitis is there. Okay, so सबको ये vaccines दी जाती है, और जो the necessary vaccines are available in all the nearby hospitals, and then you must have also seen so many advertisements on the TV, especially and also in the newspaper, especially about some of the disease in India like polio का बहुत free campaign हुआ, बहुत advertisement आए टीवी में भी, न्यूज़पेपर में भी, और फाइनली इंडिया को पोलियो से इरेडिकेट किया गया. और इस तरीके से जो है कि बहुत सारे ऐसे वैक्सीन हैं जो कि अब हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने फ्री भी कर दिए हैं, जिससे बहुत तरह के डिजीज से लोग फ्री रहें. वैक्सीनेशन जो है कि फ्री है. पल्स पोलियो प्रोग्राम तो बहुत ज़्यादा इंडिया में फेमस था, बहुत चला. ओके, सो दीज पोलियो ड्रॉप्स वर गिवन टू द चिल्ड्रन दैट आर बिलो 5 years. सो इट हैज़ बीन वर्क. अदरवाइज इंडिया में पोलियो की बहुत प्रॉब्लम पहले होती थी, but nowadays it has been eradicated because of this newspaper, this free campaigns, and also the pulse polio programs. And also a small campaigns has been done for these smallpox in ancient times. पुराने टाइम में क्या होता था कि लोग smallpox के बारे में जानते नहीं थे, and they have a myth that it is like कि some goddess or something like that. But बाद में पता चला कि ये वैक्सीन भी है और we can use it. It can be eradicated from most of the part of the world. Okay, so these days vaccines are made on large scales from microorganisms. So this microorganisms, they help in making vaccination to protect humans and even other animals from several diseases. So microorganisms का एक use आपने ये भी देखा कि it helps us in the production of vaccines. Okay, so smallpox की अगर बात करें तो smallpox was discovered, the vaccine discovered the vaccine for smallpox. There was a scientist who was called Edward Jenner. Okay, so Edward Jenner in 1798 he discovered for the vaccine for smallpox. Okay, in 1798. So this was about the vaccination, how these microorganisms they help in the production of, in the formation of vaccines. Okay. Now we will see that these microorganisms they help in increasing soil fertility. Soil के fertility को बढ़ाता है microorganism. How is that possible? So there are some bacteria that are nitrogen fixing bacteria. Okay? कुछ bacteria होते हैं जिनको कि हम क्या होते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं. ओके, सो दे आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. सो व्हाट इज हैपनिंग कि these नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू enrich the soil. What they do, they enrich the soil with nitrogen and it increases the fertility. ओके, वो सॉइल में नाइट्रोजन
nitrogen fixer. Okay, they are called as biological nitrogen fixers. They are commonly called as biological nitrogen fixers. Okay, so this is how they increase the soil fertility. Okay, by increasing the content of a soil, by increasing the content of a nitrogen. Okay, now one of the very important function of this microorganism is that they clean our environment. Okay, they just clean our environment. How do they clean our environment? Okay, so cleaning of environment. How this takes place? Okay, so in cleaning of environment, you must have seen a gardener that makes a manure. Okay, manure क्या होता है? What is that? Why we put manure in a soil for increasing the fertility, or what is this basically a manure? So what you can do? These manures are just a collected waste. Waste of what? Waste of plants. They can be a waste of vegetable peels. Okay, okay, vegetable peels or fruits. They can be from nearby houses and gardens. So what did they put? What did they do? These gardeners, they put them in a pit meant for waste disposable. जहाँ पे भी waste disposables को डालते हैं उसमें ये डालेंगे. After some time it decomposes and gets converted into a manure. ये सारे जितने waste हैं, fruits के हैं, vegetables के हैं, plants हैं, cow dung is there, तो ये क्या हो जाएगा कि कुछ दिन के बाद ये ऐसा manure बन जाएगा. After some time it decomposes and gets converted into a manure. ठीक है? So these manure, how they are linked to our microorganisms? This is a big question. For this you can do an experiment. You can just take 2 pots, fill each of them with a soil, mark it as a A and B. एक pot को आप A बोल दीजिए और एक pot को आप B बोल दो. ठीक है? अब क्या करना है कि pot A में you put these waste. ठीक है, आप वेस्ट को डाल दीजिए. वेस्ट में कुछ भी हो सकता है. पॉलिथीन बैग्स हैं, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स हैं, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज हैं. ओके, ठीक है. ए में तो हमने वेस्ट डाला. बी में क्या डालेंगे हम? ये एक में तो आप ये डाल दो, ये जो जिससे मैन्योर बनता है, और एक में आप बाकी के वेस्ट डाल दो. एम्प्टी बॉटल्स हैं और प्लास्टिक हैं. ठीक है, और दोनों पॉट को आप एक साइड में रख दीजिए एंड ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 or 4 weeks. There will be a difference in both the contents. What will you are going to see? What difference you are going to see? What is going to happen that in a pot A in which you have put the plant waste, okay, that has decomposed into a manure. Okay, manure, because there has been actions of this microorganism. Microbes का action हुआ और वो manure में convert हो गया. Nutritions released हुए in the process and can be used in the plants again. Okay, but if you will see the pot B in which you have put polythene and other waste, you will see that empty glasses, polythene bags और ये bottles जिसमें आपने put किया था, उसमें कोई change नहीं हुआ. They did not do any change. Okay, वो decompose नहीं हुआ. Okay, so the microbe could not act them and convert them into manure. So जो waste plants थे उन पे microbes का attack हुआ और वो उनको manure में convert कर दिए. Okay, so you must have seen often that there is a large amount of dead organisms in a form of decaying
कर लेते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी डेड एनिमल्स या प्लांट्स हैं। तो दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर plants and animals. Thus we can say that these microorganisms, they can be used to degrade the harmful and smelly substances. अब ये जिनकी डेथ हो जाती है चाहे एनिमल्स हैं या जो भी, तो दे आर जस्ट स्मेली सब्सटेंस, तो इनको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। तो देयर बाय दे हेल्प्स इन क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डेड एनिमल्स को या प्लांट्स को डिकम्पोज नहीं करते तो क्या होता, बहुत गंदगी हो जाती है, जो मरे हुए एनिमल्स थे वैसे ही पड़े रहते। तो इससे क्या फायदा हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें क्लीनिंग में हेल्प किए। ओके, सो दिस वाज अबाउट कि हाउ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। आपने देखा होगा बहुत सारे फील्ड्स में, एग्रीकल्चर में इनका यूज है, एनवायरमेंट क्लीनिंग में इनका यूज है, मेडिसिन में ये एंटीबॉडीज बना के कैसे हमें यूजफुल है, बहुत सारे फूड आइटम्स के लिए यूजफुल है, कमर्शियल पर्पस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि हाउ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर यूजफुल, हाउ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आवर फ्रेंड्स। ओके, so this is here I end up with my second part of the video. Okay, in the third part we will see how these microorganisms they are a foe, क्योंकि these microorganisms they cause many of the disease in humans. Humans में बहुत सारे disease microorganisms की वजह से होते हैं। So part 3 में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। part 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। So thank you so much, thank you students for watching my video. If you like it, please go to our channel Only Scholar and give a like button. And if you have not subscribed our channel yet, please do subscribe it. You can also go in Google Play. There you can download our app. It's with the name CSCS e-learning Only Scholars. You can just go and type it. There you will find many videos. PDF notes are there, MCQ questions are there, and also if you are interested for the live session, live video, one-to-one teacher and student interaction, you are most welcome. You can just mail us on our Audio Scholar Gmail ID and we shall serve you. Thank you.